हेलो डियर पेरेंट्स। मैं हूं आर्यन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल इंस्पायर इंस्टीट्यूट पे। डियर पेरेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट्स हैव अ लुक ऑन द टॉपिक्स दैट विल कवर इन दिस सेशन। फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट लेमा, देन some results based on lemma. After this, we will learn about Euclid's division lemma, then algorithm. After this, Euclid's division algorithm, and finally, applications of Euclid's division lemma. So let's move to the first topic, that is lemma. Guys, you can see here the definition of lemma. A lemma is a proven statement which is used to prove another statement. It means लेमा प्रूवन स्टेटमेंट है और इसकी सहायता से हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। यहाँ पे लेमा का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। सिंस दिस lemma is related to division, so we can call it division lemma. In our earlier classes, we have done many problems based on division. So once again, we have to recap division by making division in these two numbers. So let's divide 125 by 10, and we try to find quotient and remainder. By the way, I have already written quotient that is equal to 12 and remainder is equal to 5. After finding these two values, that is quotient and remainder, we will try to prove this lemma. So first we try to find the quotient and remainder by making division in 125 by 10. यहाँ से हम 10 से डिवाइड करते हैं 125 को, तो फर्स्टली 1 टाइम में डिवाइड होगा तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और फिर 12 और 10 का डिफरेंस 2 होगा। आफ्टर दिस हमें यहाँ पे 5 लिखना है, तो ओवरऑल ये हमारा डिजिट 25 बनेगा। अब 25 में हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 2 टाइम्स में ये 20 होगा। अब हमें यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये 5। गाइज, now let's recap the definition of all these four terms: dividend, divisor, quotient, and remainder. Firstly, we talk about 10. Here, 10 is divisor. Why? Because by this number, division is made in 125. Divisor ऐसा नंबर होता है जिससे हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड किया गया है 125 में, इसलिए 10 डिवाइजर है। आफ्टर दिस we talk about this number 125. This is dividend here because in this number division is made by 10, so it is dividend here. Now we talk about 12. In order to make division in 125 by 10, the division has been made in 12 times here. That is why 12 is quotient here. क्वोशेंट वो नंबर होता है जितने टाइम में भाग लगता है, उसे हम क्वोशेंट कहते हैं। अब इन सब के अलावा जो नंबर फाइनली हमें ऑब्टेन होता है, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। अब हमें इस लेमा को प्रूव करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके आरएचएस पार्ट में चलते हैं, जो कि है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर।
अब यहाँ से हम लोग इसके वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो सबसे पहले डिवाइज़र का वैल्यू 10 है, 10 लिखते हैं। देन कोसेंट, कोसेंट 12 दे रखा है, तो यहाँ से 12 और फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे 5 है। अब 10 और 12 का प्रोडक्ट 120 होगा और 120 में हमें 5 को ऐड करना है, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन होता है वो होता है 125। नाउ आप यहाँ से देख सकते हो 125 डिविडेंड है, सो आई कैन राइट हियर डिविडेंड। अब यहाँ से आप मैच कर सकते हो, इसकी आरएचएस पार्ट का वैल्यू ये था डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया, वैल्यूज़ को पुट करा और उसके बाद यहाँ डिविडेंड तक आ गया, जो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, दैट मीन्स इसका एलएचएस वैल्यू है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी दो नंबर्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन डिवीजन लेमा। Here, in order to find divisor, you have to subtract the remainder from dividend and then the difference must be divisible by quotient. सो यहाँ पे हमें अगर क्या करना है, डिवाइज़र फाइंड करना है, तो उस ऑर्डर में हमें रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना होगा डिविडेंड में से और उसके बाद फिर उसे डिवाइड करना होगा, उस डिफरेंस को डिवाइड करना होगा क्वोशेंट से। तो हम लोग पहले इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या रियल में ये वर्क करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू लिखते हैं डिविडेंड का। तो डिविडेंड वहाँ पे 125 था, तो 125 माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर का वैल्यू 5 था और उसके बाद फिर क्वोशेंट, क्वोशेंट का वैल्यू यहाँ से 12 था। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 125 माइनस 5 तो ये 120 होगा और 120 में हमें 12 से डिवाइड करना है। तो इस केस में यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आता है वो 10 आता है और ये 10 कुछ और नहीं है बल्कि ये डिवाइज़र। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमें डिवाइज़र फाइंड करना है तो उस कंडीशंस में हमें अगर डिविडेंड, रिमाइंडर और क्वोशेंट दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके डिवाइज़र फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप क्वोशेंट को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए डिविडेंड में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना होगा और उसके बाद इस डिफरेंस को डिवाइज़र से डिवाइड करना होगा। वैसे फर्स्ट और सेकंड जो फॉर्मूला यहाँ पे है, इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वाले में डिवाइज़र के प्लेस पर फर्स्ट और सेकंड में बस थोड़ा-सा डिफरेंस है और ये है कि डिवाइज़र के प्लेस पर क्वोशेंट है और क्वोशेंट के प्लेस पर डिवाइज़र है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फॉर्मूला दैट इज़ रिमाइंडर। अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा डिवाइज़र और क्वोशेंट का प्रोडक्ट डिविडेंड में से, तो उस कंडीशन में आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्वलेट्स डिवीजन लेमा। अगर आपको कोई भी दो इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है और सपोज कर लीजिए कि वो ए और बी है, उस केस में आप दो यूनिक होल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं और वो आप क्यू और आर कंसिडर कर सकते हैं। तो उस केस में आप उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर will be greater or equal to 0 but it will be less than b. So the definition of lemma is like this: for any two given positive integers a and b, there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, where r is greater or equal to 0 but less than b. Here a can be referred to dividend, b as divisor, q as quotient and r as remainder. आप यहाँ पे देख भी सकते हो ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये एक लेमा ही है, बट यहाँ पे इसे अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है और यहाँ पे आप डिवीजन लेमा के फॉर्म में देख सकते हो कि इसे लिखा गया है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो एक ए यहाँ पे
डिविडेंड होगा, बी डिवाइजर, क्यू कोसेंट और उसके बाद आर रिमाइंडर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें हमें पहले एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है। तो एल्गोरिदम क्या है? तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये एल्गोरिदम कुछ और नहीं है, बल्कि जैसे अगर हमें डिवीजन ही करना है तो डिवीजन प्रोसेस में अगर वन स्टेप में पूरा डिवीजन नहीं हो पाता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगेन एंड अगेन सेम प्रोसेस को, सेम स्टेप्स को हम कह सकते हैं रिपीट करते हैं। तो उस कंडीशन में उन सभी स्टेप्स का जो कलेक्शन होगा, ठीक है, वो सब मिल करके क्या करेगा, एक एल्गोरिदम का फॉर्मेशन करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? तो ये एक हम कह सकते हैं टेक्निक है या फिर एक वे है जिसका यूज करके हम किसी भी दो नंबर्स का सीएफ फाइंड कर सकते हैं। और इसमें हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना होगा। वैसे तो हमें एचसीएफ फाइंड करने का अलग अलग तरीका पता है, जैसे कि हम लोग डिवीजन मेथड से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर इसी तरह से फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम नंबर को देख लेते हैं, कौन कौन सा नंबर होगा। अगर हमारे पास ए और बी कोई दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, तो वहाँ पे अगर हमें क्या करना है, एक ए और बी का एचसीएफ फाइंड करना है। इस कंडीशन में ये दे रखा है कि ए इज ग्रेटर है बी से, तो उस कंडीशन में हम इन सब स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो हमें डिवाइड करना होगा ए को बी से, और इस ऑर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करने के बाद हमें क्यू और आर ऑब्टेन हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। अब अगर इस स्टेप में क्या होता है कि जीरो, आर का वैल्यू अगर जीरो आ जाता है, तो उस केस मतलब उस कंडीशन में ए और बी का जो एचसीएफ होगा वह बी होगा। दैट मीन्स वो डिवाइजर होगा जिससे हम क्या करते हैं, ए को डिवाइड करते हैं। बट अगर आर का वैल्यू जीरो नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे बी और जो हमारा रिमाइंडर होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेम प्रोसेस होगा डिवीजन का, उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आर मिसिंग है, सो बी और आर के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे। और ये प्रोसेस तब तक के लिए कंटिन्यू रहेगा जब तक के लिए हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। तो इस तरह से जिस भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा, वहाँ पे जो लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। और इस मेथड को हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें क्या करना होता है, मतलब बार बार अगेन एंड अगेन वी हैव टू जस्ट डू डिवीजन। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को यहाँ से इस तरह से मतलब बोला गया है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Here it is not topic, it's a question which is based on division lemma that we have just studied a little before। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है ये क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है कि ऑन डिवाइडिंग अ नंबर n बाई 15 द quotient is obtained as 4 and remainder is 5, तो find the value of n। अब हम लोग फिर से इसकी डेफिनेशन को रिकैप करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो नंबर डिविडेंड होता है। तो यहाँ पे बोला है कि ऑन डिवाइडिंग और नंबर एन, वो नंबर एन दे रखा है, तो यहाँ से डिविडेंड का वैल्यू एन होगा। नेक्स्ट में हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे 15 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिवाइजर का वैल्यू 15 है। अब इसके बाद कोसेंट, कोसेंट ऑलरेडी क्लियर है, कोसेंट का वैल्यू 4 दे रखा है, तो हम यहाँ पे कोसेंट इज इक्वल टू 4 लिखते हैं। और फाइनली जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 5 है। अब हम
यहाँ से डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं और उसके बाद एन का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो एन का वैल्यू सॉरी डिविडेंड का वैल्यू एन है और डिवाइजर दैट इज 15। नेक्स्ट quotient is equal to 4, so 15 into 4. Now we have to add remainder, that is 5. On multiplying 15 and 4 we get 60, and on adding 5 to 60 we get 65. So in this way we got the value of n. Clearly the value of n is here 65, hence the value of n is equal to 65 here. Now let's move to the next question, that is here by using Euclid's division lemma we have to find the SCF of 135 and 225. So before finding the SCF, let's divide 225 by 135 in order to obtain SCF in division form. Then we can express this division in the form of Euclid's division lemma. So let's find it here. 135 and 225. On dividing 225 by 135, we get here the difference of these two numbers as 90. Now by 90 we have to divide 135. Division will be go into one time, so here will be 90. Now the difference of these two numbers will be 45. Once again we have to divide 90 by 45 in two times, it will be completely cancelled. Guys, now we can express this division process in the form of Euclid's division lemma. So let's try to do it. Firstly, we have to write, since 225 is greater than 135, so applying Euclid's division lemma to 225 and 135, we get 225 is equal to 135 into 1 plus 90. Now the remainder ninety is not equal to 0, so the process
is continue. Now we have to divide once again 135 by 90 in order to get remainder is equal to 45 and quotient is equal to 1. On dividing 135 by 90, we get quotient is equal to 1 and remainder is equal to 45. Now applying Euclid's division lemma, we get we get 135 is equal to 90 into 1 plus 45. Since the remainder 45 is not equal to 0, so the process remains continue. Now on dividing 90 by 45, we get 2 as quotient and 0 as remainder. Applying Euclid's division lemma here, we get 90 is equal to 45 into 2 plus 0. Since the remainder is 0 here, so the last divisor 45 will be the SCF of the two numbers given, that is 135 and 225. Hence the SCF of 135 and 225 is 45. In this way, we can find the SCF of any two given positive integers by using Euclid's division lemma. Now let's move to the next next question, that is find the SCF of 52 and 117 and express it in the form of 52x and 117y. Firstly, we try to divide 117 by 52, so the division will be made in two times, so it will be 104.
Now the difference will be 13. By 13 we have to divide 52, so the division will go into 4 times. Clearly, the SCF of these two numbers, 52 and 117, is 13. Now we have to express this SCF in this form, 52x and 117y. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इसे लेमा के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ से बोल सकते हैं अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 52 and 117 we get। यहाँ से फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 117 इज इक्वल टू 52 इंटू 2 प्लस 13। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं और फिर यहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा 52 इज इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0। इट्स द सेकेंड इक्वेशन। अब जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, इससे हम एक वैल्यूज डिराइव करते हैं और वो हम यहाँ पे 13 का वैल्यू निकालेंगे। तो 13 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 117 में से हमें माइनस करना होगा 52 इंटू 2। सो लेट्स गो इन द नेक्स्ट स्लाइड एंड ट्राई टू डू इट। फ्रॉम 1 we get 13 is equal to 117 minus 52 into 2. Now, according to the format given there, that is 52x plus 117y, we have to express this expression in this form. So हमें क्या करना है, सबसे पहले 52 को स्टार्टिंग में लाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे -52 इंटू 2 करते हैं और फिर इसे इधर लिखते हैं। इस कंडीशन में ये हो जाएगा प्लस 117। अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें इसे 52 को पॉजिटिव रखना है, बट यहाँ पर ये निगेटिव है। तो इस कंडीशन में हमें इसके साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा और इसके साइन को भी माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स हमें इन दोनों का साइन आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये 52 हो जाएगा और यहाँ पर -2 जो +2 था वो -2 हो जाएगा और ये वाला वैल्यू सेम रहेगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये 52 इंटू -2 है। इसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो और इस 117 को तो 117 ही रखेंगे, बट यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में आप इसे इंटू करके 1 लिख सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब जब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को और इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें पता चलता है यहाँ पे जो x है उस x का वैल्यू -2 आ रहा है और y का वैल्यू 1 आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हेंस x is equal to -2 and y is equal to 1. Now let's move to the next question, that is here these questions are based on applications of Euclid's division lemma. In this question,
it is told that every positive, we have to show every positive integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q. So let's try to do this question. Firstly, let the positive integer be a and b is equal to 4. Now applying Euclid's division lemma, we get a is equal to 4q plus r, where r is greater or equal to 0 but less than 4. In the next step, it will be 4q plus r, where the value of r will be, from this expression we can find the value of r, that is r is greater or equal to 0, so the value of r will be 0, next 1, 2 and 3. Here we consider this equation as first. So putting r is equal to 0, 1, 2 and 3 in equation 1, we get a is equal to 4q plus 0. Here there is no any benefit of writing 0, that is why simply I write here 4q. Next 4 इस तरह से लिख सकते हैं 4q प्लस 1 और फिर 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3. अब हमें यहाँ पे ऑड इंटीजर्स को दिखाना है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑड इंटीजर्स यहाँ पे और ये 1 और 3 है. इस तरह से जो हमारे पास ये 4 एक्सप्रेशंस है, उसमें से ये एक एक्सप्रेशन और दूसरा हम कह सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन और इंटीजर्स होगा. तो फिर यहाँ से ये क्लियर होता है, क्लियरली कह सकते हैं 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 are the expressions of odd integers. For some positive integer q. अब फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. यहाँ पे हमें दिखाना है the square of any positive integer is of the form 3q or 3m और 3m plus 1 for some integer m. तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a है,
Let a be a positive integer, and b is equal to 3. By using Euclid's division algorithm, we get a is equal to 3q plus r, where r is greater or equal to 0 but less than, sorry, it will be here 3. In the next step, we get the value of r as r is equal to 0, 1, 2. Now we can write a is equal to 3q plus 0, that means it will be only 3q, or a is equal to 3q plus 1, or a is equal to 3q plus 2. Since we know that an odd integer is only this here, means we know that an odd integer is of the form 3q plus 1. So sorry, there is no any instruction in the question as odd integer. It is given only any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. So we don't have to talk about odd integers. There will be considered all odd and even integers. So we have three cases here. First one is this, second one is this, and the third one is this. So let's talk about all these three cases. Case 1, when a is equal to 3q. On squaring both sides, we get a square is equal to 3q into 3q, that is equal to 9q square. Now we have to express it in the form of 3m. So on taking 3 as common, we get 3 into 3q square, where 3q square is equal to m. So m is equal to here 3q square, and m is here positive integer.
Now let's talk about the second case, that is a is equal to 3q plus 1. Case 2, when a is equal to 3q plus 1. Squaring both sides, on squaring both sides we get a squared is equal to 3q whole square plus 2 into 3q into 1 plus 1 square. So it will become 9q square plus 6q plus 1. Now on taking 3 common from the first two term, we get 3q square plus 2q and plus 1. So this can be written as 3m plus 1, where m is equal to 3q square plus 2q, and this is equal to integer. Now let's talk about third case, case 3, when a is equal to 3q plus 2. On squaring both sides, we get a square is equal to 9q square plus 2 to the 4 into 3, 12q plus 4. Now we can split this 4 into 3 as like 3 plus 1. So on taking 3 as common from the from this expression, it can be converted into this form: 3 into 3q square plus 4q plus 1 plus 1. Here 3m plus 1, where m is equal to 3q square plus 4q plus 1, and this is equal to integer. Finally, the square of the square of any positive integer is of the form for a moment. I am hiding my pic here, of the form 3m or 3m plus 1 proofs. Now let's move to the next topic, that is
a question based on Euclid's division lemma here. Out of these three expressions, only one is divisible by 3. We have to just prove it. Uh, let n be a positive integer and b is equal to 3. Applying Euclid's division lemma, we get here in instead of a I consider n, so it will become n is equal to uh, n is equal to 3 q plus r, where r will be greater or equal to 0 but less than 3. Hence, the value of r will be r is equal to 0, 1, and 2. Now, we have three cases for all these three different values. Case 1, case 1, when we have to put n is equal to 3q plus 0. That means यहाँ से हम कह सकते हैं firstly here we do one step more. N is equal to 3q plus 3q plus 0. That means it will remain same. Now we consider this as case 1, so it will become 3q. Here it is divisible by 3. It is divisible by 3. Now we have to find the value of n plus 1 for this value of n. So we get n plus 1 is equal to 3q plus 1. This is not divisible, not divisible by 3. Similarly, we have to find the value of n plus 2. So it will become 3q plus 2. This value is also not divisible by 3, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 3 फर्स्ट टर्म में कॉमन तो है बट सेकेंड टर्म में 3 नहीं है, और 2 हमें पता है कि 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये भी डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3. Now let's talk about second case, that is case 2, where when n is equal to 3q plus 1. अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, तो ये वाला वैल्यू नॉट डिविजिबल, क्या कह सकते हैं
नॉट डिविजिबल बाय 3। फिर आगे सेकेंड केस जो है n प्लस 1, तो इसमें हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, ये भी नॉट डिविजिबल बाय 3। फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक और जो लास्ट केस है n प्लस 2, तो इसके लिए 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 2 करते हैं, तो इस केस में हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 3, और ये देख रहे हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 3। नाउ वी टॉक अबाउट केस 3। यहाँ पे देखिए हमारे पास when n इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, तो ये देख रहे हैं कि ये डिविजिबल नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 3। फिर आगे इसी में हमारा वैल्यू हमें फाइंड करना होगा n+1 का वैल्यू, तो n का वैल्यू 3 क्यूब प्लस 2 है, इसमें हम क्या करेंगे फिर से 1 ऐड करेंगे, तो इस केस में बन जाएगा 3 क्यूब प्लस 3, और ये देख रहे हैं कि डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाय 3। और फिर एक लास्ट स्टेप हमें करना है, तो यहाँ से हो जाएगा n+2, तो ये 3 क्यूब प्लस 2, इसमें फिर 2 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 4। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये एक्सप्रेशन भी 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे है, इसमें आप देखो पहले n इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 है, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें क्या करना है ना, तीन वैल्यूज n n+1 और n+2, इन तीनों एक्सप्रेशंस में से कोई एक एक्सप्रेशन ही 3 से डिविजिबल है, ये चीज़ देखना है। तो आप देखो यहाँ से कि ये वाला फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तो ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि आप देख सकते हो 3 क्यू में तो डिवाइड होगा लेकिन 2 में फिर नहीं होगा। तो फिर आगे फिर बढ़ते हैं सेकंड में, तो सेकंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्यू प्लस 3 है, तो ये वाला डिविजिबल है। फिर थर्ड इस तरह से नहीं होगा डिविजिबल, क्योंकि 3 क्यू में डिवाइड होगा, 4 में डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से हर एक केस के लिए तीन वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ही 3 से डिविजिबल होगा। अब केस सेकंड अगर देखना है, तो इसमें भी आप देख लो, यहाँ पर केस सेकंड में है n=3 क्यू प्लस 1, तो ये वैल्यू डिविजिबल नहीं है। सेकंड वाला जो n+1 का एक्सप्रेशन है, ये वाला भी डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पे थर्ड में हम देखें कि 3 क्यू प्लस 3 था, तो ये डिविजिबल है। फिर इस तरह से ये जो फर्स्ट केस है, इसको भी आप देख सकते हो, तो n=3 क्यू है, ये वाला डिविजिबल है। और अदर टू केसेस जो है, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं n+1, ये नॉट डिविजिबल है, और उसी तरह से यहाँ से n+2, ये भी नॉट डिविजिबल है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे थर्ड केस पे, सॉरी, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे। तो यहाँ से देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन सो दैट n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ से ऑड इंटीजर के बारे में हमें यहाँ पे बताया जाना है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सपोज कर लेते हैं कि n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। यहाँ से हम मान लेते हैं कि लेट n बी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर and b is equal to 4. Now, using Euclid's division algorithm, we can find
applying Euclid's division lemma, we get n is equal to 4q plus r, where r is greater or equal to 0 but less than 4. अब यहाँ से हम r का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा n इज इक्वल टू 4q प्लस r, where r is equal to 0, 1, 2 एंड 3. अब यहाँ से हमें पता है कि कोई भी जो ऑड इंटीजर होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो हम जानते हैं कि n इज इक्वल टू 4q प्लस 1 एंड n is equal to 4q plus 3 are the form of positive odd integer. odd integer. तो हमारे पास यहाँ पे दो केस है, एक ये ऑड इंटीजर का केस है, दूसरा ये है. तो केस हम 1 कंसीडर कर लेते हैं. केस 1 when n is equal to 4q plus 1. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 1. अब n का वैल्यू यहाँ पे 4q प्लस 1 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4q प्लस 1, इसका पूरे का स्क्वायर होगा, फिर माइनस 1 करेंगे. तो इस केस में ये क्या होगा, तो ये 4 का स्क्वायर डैट मीन्स हम कह सकते हैं 16q स्क्वायर. उसके बाद फिर 2ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करेंगे, तो इस कंडीशन में 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 इंटू 4q और इंटू 1, तो यहाँ पे ये 8q हो जाएगा, और फिर यहाँ से 1, और फिर ये सॉरी माइनस वाला जो 1 है वो लिखेंगे, ये माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा 1. तो इस कंडीशन में ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो इस दोनों टर्म में हम 8 को कॉमन ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में 2q प्लस यहाँ पे q स्क्वायर होगा, 8 और 2q स्क्वायर प्लस यहाँ से q. अब यहाँ देख सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8. तो यहाँ से कह सकते हैं कि क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय divisible by 8. Now let's move to the uh, second case, and that is case 2. इसमें हमारे पास n का वैल्यू है when n is equal to 4q प्लस 3. अब यहाँ से हम फिर से क्या करते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकालते हैं, तो इस केस में ये हो जाएगा 4q प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1. अब इसको ब्रेक करते हैं, तो इस कंडीशन में हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24q प्लस 9 एंड माइनस 1. अब यहाँ पे हम 8 को फर्स्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को 9 में से, तो इस केस में ये हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8. अब 8 कॉमन लेते हैं, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1. फाइनली यहाँ पे देख रहे हैं 8 इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हेंस इट इज
also divisible by 8। तो कोई भी जो एक्सप्रेशन होगा ऑड एक्सप्रेशंस, तो वो क्या होगा ना एन स्क्वायर माइनस वन के फॉर्म में होगा, तो उस कंडीशन में वह 8 से डिविजिबल होगा। इस तरह से हमने इसको प्रूव किया। अब फिर बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ नहीं है बल्कि ये है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए a lot of thanks to all of you. Please keep supporting us by subscribing our channel and doing comments and by liking our sessions. Meet you in the next session. Till then, bye bye. Take care.